हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के MCQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ऑप्शंस आर जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर एंड विक्टर कैनिंग। सो कौन है ऑथर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, that is James Herriot. Second one is, who does I refers to in the story? अब स्टोरी का नरेटर कौन है? ऑप्शंस आर ट्रिकी, मिसेस पेम्फ्री, वेटरनरी सर्जियन और नन ऑफ द अबव. So correct answer is C, that is veterinary surgeon. Third one is, what is the name of the veterinary surgeon? क्या नाम था veterinary surgeon का? ऑप्शंस हैं ट्रिकी, मिसेस पेम्फ्री, हॉजकिन और मिस्टर हैरियट. So right answer is D, that is Mr. Herriot. Next, what problem does Mrs. Pumphrey think Tricki has? Mrs. Pumphrey को क्या लगता था कि Tricki को क्या problem है? Options are diarrhea, malnutrition, allergies and all of the above. So correct answer is B, that is malnutrition. So next one is, who is Hodgkin? Hodgkin कौन है? ऑप्शंस आर डॉग ओनर, गार्डनर, वेटरनरी सर्जन और डॉग. सो हॉजकिन कौन है? गार्डनर ऑफ मिसेस पेम्फ्री. नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले? डॉग यानी कि ट्रिकी क्या नहीं खेल पा रहा था? ऑप्शंस आर रिंग थ्रो, वॉक, हाइड एंड सीक एंड ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रिंग थ्रो. नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या एडवाइस किया? ऑप्शंस आर कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर बेंड, वरिड, अपसेट एंड बोथ बी एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, यानी कि दुखी और परेशान होना. नेक्स्ट, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था? ऑप्शंस आर रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, डिडंट गो फॉर वॉक्स, वॉमिटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, व्हाट वॉज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? वेट के अकॉर्डिंग ट्रिकी के लिए क्या सही था? ऑप्शंस हैं to take him to the hospital, to take him for a walk, to let him have sugar and both B and C. So the correct answer is A, that is to take him to the hospital. 11 sentences. Why did other dogs ignore Tricki? So Tricki जब क्लिनिक पहुंच गया वहाँ पे बाकी डॉग्स सब ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर रहे थे? ऑप्शंस आर he was an uninteresting object, he was ill, he was furious and all of the above. So the correct answer is, according to them, he was an uninteresting object, that is option A. Next is, for how many days Tricki was given no food? तो जब वो क्लिनिक पहुंचा ट्रिकी को कितने दिन तक कोई भी फूड नहीं दिया गया? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 and 5. So correct answer is 2. So next is, who was Joe? Joe कौन था? Options are nurse, pug, greyhound and cat. So correct option is C, that is Joe was a greyhound. Next, what is the meaning of the word jostling? Jostling word का क्या मतलब है? Options are running, struggling, walking and thinking. So jostling means struggling, that is option B. What is the meaning of the word scrimmage? Scrimmage का क्या मतलब है? Options are fight, play, run and none of the above. So correct answer is fight. Scrimmage means to fight. What is the meaning of the word convalescing? Convalescing word का क्या मतलब है? Options are condescending, worsen, disappointing and recovering. So convalescing means recovering. Next,
What did Mrs. Pumphrey bring first? तो एट द क्लिनिक मिसेस पेम्फ्री फर्स्ट टाइम क्या लेकर गई? ऑप्शंस हैं एग्स, ब्रांडी, वाइन एंड ऑल ऑफ दी अबव. सो सबसे पहले मिसेस पेम्फ्री क्या लेकर गई थी? एग्स. नेक्स्ट, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रीज ओवरडूइंग? स्टाफ को कैसे बेनिफिट हुआ मिसेस पेम्फ्री के बिहेवियर से? ऑप्शंस आर ब्रेकफास्ट विद एग्स, lunch with wine, dinner with brandy, and all of the above. So the correct answer is option D, that is all of the above. Next, what made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? After 15 days, narrator ने Mrs. Pumphrey को क्यों बुलाया था? Options are Tricki got recovered, Tricki got unwell, he knew she is suffering, and both A and C. So correct option is answer D, that is Tricki got recovered and he knew that she is also suffering. Next, what did they use out of these? वहाँ पे उन्होंने क्या क्या यूज़ किया क्लिनिक में ट्रिकी के लिए? Options are toys, cushions, coats and none of these. So correct option is none of these. Next MCQ is, how would you describe Mrs. Pumphrey? Mrs. Pumphrey का behavior कैसा था? How was she? So options are loving, overdoing, intelligent and rational. So as per the chapter, her behavior was, yes, overdoing. That is option B. Next, how would you describe the vet? Vet कैसा था? Options are tactful, overdoing, careless and irrational. So vet was tactful. Correct option is answer A. Next, was Tricki happy on seeing Mrs. Pumphrey? Tricki खुश था Mrs. Pumphrey को देखकर? Options are yes, no, maybe and no emotions. So correct answer is yes, he was very happy to see Mrs. Pumphrey. Next, who do you blame for Tricki's illness? Tricki के बीमार होने के पीछे कौन जिम्मेदार था? Options are Mrs. Pumphrey, Tricki himself, Herriot and vet. So correct option is Mrs. Pumphrey. क्यों? क्योंकि वो उसे overfed कर रही थी. Next, in 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. What is the meaning of the word lithe? Lithe word का क्या मतलब है इस लाइन में? Options are dirty, graceful, misbehaving and rude. So correct answer is option B, that is graceful. Next, what does the narrator refer to Tricki as in the group of other dogs? बाकी डॉग्स के ग्रुप में ट्रिकी को नरेटर ने कैसे रेफ़र किया है, क्या बताया है, कैसा था ट्रिकी? सो ऑप्शंस आर सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, ही डिडंट से एनीथिंग और नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा? Options are he met with an accident, of bad weather, he didn't get proper food to eat, and last one is his mistress overfed him. So the correct answer is D, that is his mistress overfed him. Next, I think I know a cure for you. Who is I? इस लाइन में I कौन है? Options are Mrs. Pumphrey, Mrs. Pumphrey's husband, Mr. Herriot and Mrs. Pumphrey's servant. So correct option is option C, that is Mr. Herriot. Next, what did the doctor give Tricki at his clinic? Clinic में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? Options are many injections, medicines, no food for 2 days, and last one is only milk and chocolate. So the correct option is option C, that is no food for 2 days. Next, how did Tricki look? Tricki कैसा लगता था initially? Options are very thin, like a bloated sausage, very smart, and always ready to run. So the correct answer is option B, that is like a bloated sausage. So ये थे हमारे MCQs chapter 1, that is a triumph of surgery के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and do subscribe to my channel. Thank you for watching.